कहा कि आज का दिन क्यों जरूरी हो जाता है और इसके जो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज का ही जो दिन बताया जा रहा है कि नए संसद की तरफ अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे हमारे जितने सांसद हैं। जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है और विशेष सत्र तो बुलाया ही गया इस बार, लेकिन अब दरवाजा खोला जाएगा एमपीज के लिए क्योंकि आज वहीं पे जो पहली बैठक होने वाली है, जो पहला आपका जो सेशन होने वाला है विशेष सत्र का, वो अब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से शुरुआत होगा। मॉडर्न डिजाइन के साथ साथ यहां पर कई ऐसी चीजें हैं जहां तक हमारे नेशन, हमारे जो देश के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसे दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। एंड टू कमेमोरेट दिस हिस्टोरिक ओकेजन एक स्पेशल किट तैयार करी गई है हमारे सांसदों के लिए। एमपीज को इस स्पेशल किट में बताया जा रहा है कि संविधान की एक कॉपी मिलेगी, एक कमेमोरेटिव सिक्का मिलेगा और एक पोस्टेज स्टैम्प मिलेगा जो आज अब नए पार्लियामेंट की तरह, मतलब जो नई बिल्डिंग है उसकी जो तस्वीर है वो उसमें छपी हुई नजर आएगी। एमपीज के पास अब एक नया आईडी कार्ड भी होगा जिसमें नई बिल्डिंग की तस्वीर होगी और शायद बताया जा रहा है कि उनके बायोमेट्रिक्स भी ली गए हैं ताकि वो बिल्डिंग के अंदर बाहर आ जा सके। When the Member of Parliament enters the new Parliament building tomorrow, there will be a kit for them as well. The kit has a copy of Constitution, a big and a small one, and also a newsletter speaking about the Gaurav Gatha of this new Parliament building. And also there would be a commemorative coin along with the stamp ticket, also the dark ticket of the new Parliament building. If I could just show you what this kit contains, it has this newsletter and also it has this newsletter and it also has a dark ticket, a stamp basically, sort of. If you could just see, it has this, and then there is a copy of Constitution in it. There is also a commemorative coin that is there for the new Parliament building. It's gonna be historical and everyone would boast of keeping this, and also this small copy of Constitution of India. So this all will be part of the small kit that these MPs are gonna get. These MPs are gonna get tomorrow as they enter the new Parliament building. This is Pragya Kaushik for Times Now from the Parliament. चलिए, आपने एक किट के ऊपर तो नजर डाली है, लेकिन आज की जो कार्रवाई है और जिस तरह से हम देखेंगे ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा वो किस तरह से होगा और किस तरह से अगर सीमलेस होगा उसकी जो तैयारियां हैं उसके बारे में बता देते। जो पुरानी अब संसद की जो बिल्डिंग है 9:30 बजे आज सुबह बताया जा रहा है कि वहां पर फोटो ऑप होगा, सभी जो जितने सांसद है वो वहां पहुंचेंगे। एक स्पेशल प्रोग्राम आयोजित किया गया है जो सुबह 11 बजे से शुरू होगा और इस कार्यक्रम में बताया जा रहा है जो पूरी हिस्टोरिकल लेगेसी है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्किटेक्चरल जो डिजाइन है वो शायद अंग्रेजों का रहा हो, लेकिन जो मेहनत लगी है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए वो भारतीय है, वो इंडियन सिटीजन्स है। और जिस तरह से विजन 2047 के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करी थी, तो यहीं पर एक संविधान की जो कॉपी है, वहां जो सेंट्रल चेंबर जो पार्लियामेंट का है और सीनियर एमपीज है वहीं सब एकजुट होंगे और नए पार्लियामेंट की तरफ अग्रसर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी बताया जा रहा है कि वो लीड करेंगे सारे एमपीज को पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेकर नए पार्लियामेंट बिल्डिंग तक। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के।
तो इसी मैसेज के साथ चलते हैं आकांक्षा की तरफ। आकांक्षा हमारे साथ अभी लाइव जुड़ी हुई है। गुड मॉर्निंग आकांक्षा। और जिस तरह से करीबन अगर 75 वर्षों के बारे में बात करें संसद से, जिस तरह से अगर एमपीज का भी कहना है, उन्होंने लिखकर भी अपने जो नोट है, हमने देखा है कि कई ऐसे महिला सांसद है जिन्होंने अपनी जो यादें हैं वो एकजुट करके उन्होंने कहा है कि काफी खट्टी मीठी यादें तो रही है, लेकिन जो नया जो संसद है वो प्रेरणा देगा। नई सोच और नए विचार के साथ सभी जितने हमारे सांसद है वो अब नई संसद बिल्डिंग में जाएंगे। Well, absolutely. Yesterday, remember, Prime Minister had also said that now we are moving to the new Parliament with a better hope for future. And definitely today is going to be a very important day. And it also comes on Ganesh Chaturthi, which in itself symbolizes new beginnings. So definitely a very important day. It will start with a photo of the Lok Sabha MPs as well as the Rajya Sabha MPs. And after that, Prime Minister Narendra Modi will take the copy of the Constitution to the new building. And that is how this new beginning will definitely begin. And yesterday Prime Minister had said that this transition is for the better hope for the future. So quite an important day if we look at it, and also comes on the day when there is Ganesh Chaturthi, which symbolizes new opportunities. Absolutely. तो विघ्नहर्ता का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे और आज जो नई शुरुआत हो जा रही है विशेष सत्र के साथ, तो आज दूसरा दिन माना जाएगा। लेकिन नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में जिस तरह से जो सरकार का काम रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का विजन रहा है, वो एक बार देख लेते हैं कि कितने अहम और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन। New India needs a new parliament. It was with this resolve and vision that Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of new parliament building. स्वामी विवेकानंद जी ने उनके उस आह्वान को याद करते हुए हम सबको ये संकल्प लेना है। ये संकल्प हो इंडिया फर्स्ट का, भारत सर्वोपरि। हम सिर्फ और सिर्फ भारत की उन्नति, भारत के विकास को ही अपनी आराधना बना ले। हमारा हर फैसला देश की ताकत बढ़ाए, हमारा हर निर्णय, हर फैसला एक ही तराजू में तोला जाए, और वो तराजू है देश का हित सर्वोपरि, देश का हित सबसे पहले। हमारा हर निर्णय वर्तमान और भावी पीढ़ी के हित में हो। Less than 3 years from the day as New India takes shape in Amrit Kal, the People's Parliament, as the Prime Minister envisioned it, is ready to throw its doors open for the legislators. The transformation has personally been supervised by the Prime Minister, marking a journey from shedding our colonial past and stepping into an era of Atmanirbharta. Brick by brick, the new Sansad came into being, metamorphosizing from old and dilapidated to modern and state-of-the-art. And on May 28 this year, the majestic marvel saw the Prime Minister install a historic golden scepter known as Sengol near the Speaker's seat. This was in recognition of a deep historical significance connected to the birth of our nation, when power was to be transferred from the British to India in 1947. Amidst chants of mantras, the Adhinams handed over the symbol of transfer of power to the Prime Minister and restored the rightful legacy. लोकतंत्र के मंदिर में आज सेंगोल को उसका उचित स्थान मिल रहा है। मुझे खुशी है कि अब भारत की महान परंपरा के प्रतीक उसी सेंगोल को
नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। ये सेंगोल इस बात की याद दिलाता रहेगा कि हमें कर्तव्य पथ पर चलना है, जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह बने रहना है। As legislators sign out for one last time, it is going to be an emotional farewell to the premises that have served as the temple of democracy for over 7 decades. Premises that have seen history being made will now themselves be a part of history. Now, even as Prime Minister Narendra Modi, who laid the foundation stone of the new parliament building almost 33 months ago, he said that if the old house gave direction to post-independence India, the new building would now become a witness to the making of Atmanirbhar Bharat. लेकिन ये जो चेंज है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक ट्रांजिशन के बारे में नहीं है, ये जरूरत भी थी। और आज के दिन इसकी जरूरत क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स ये सिर्फ कोई वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं है। जिस तरह से ऑपोजिशन की तरफ से बार बार ये दलील दी जाती है, इसकी आखिरकार जरूरत क्यों आ पड़ी, इसके बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। The old Parliament building is a historical landmark. It has guided India's destiny before and after independence for over 9.5 decades. It witnessed India's tryst with freedom. Stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. And is now going to become a part of history itself. But why was this change required? Yes, it's a switch from a colonial era structure to a bigger, better complex that suits aspirational India. But that was not the only reason why this project was in urgent need. The old parliament was not built to house the current bicameral legislature. That is, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Space was in short supply, and things were so bad that during a joint session, MPs were forced to sit on plastic chairs in the central hall. And all of this would have gotten worse after the 2026 delimitation, which would mean that the total number of MPs in Parliament would go up further. And the worst part was that the current Parliament House endangered the lives of MPs, as it did not conform to fire safety norms and was also not earthquake resistant. Spread over 6 acres, the building was first unveiled in 1927, and after 96 years of being in service, the building was fast running its course. The Narendra Modi government reportedly began looking for new sites to shift the parliament following concerns over signs of distress and overutilization. The new Parliament building represents a significant upgrade in capacity and amenities. It can accommodate over 870 MPs in the Lok Sabha, which is significantly higher than the current capacity, and replaces the need for a central hall for joint sittings. The new Rajya Sabha chambers too are more spacious, with a seating for 384 members as against 245 in the old premises. The old parliament has often been described as a sentinel of time and repository of India's democracy. But the time has now come to take a step forward and go from a post-independence era country trying to find its feet to the 21st century India that stands on a firm footing. Bureau Report, Times Now.